Okay, बच्चों, let's talk about what is the concept of break even. Break even एक ऐसा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी फैक्ट्री का, किसी भी रिटेल स्टोर का, किसी भी यूनिट सेलिंग कंपनी का, जहां पे उसका टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है. We can also call break even analysis is calculated to find out the minimum production level required to cover the costs, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे कॉस्ट विल बी कवर्ड और उसके बाद फिर आपको प्रॉफिट शुरू होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. और ब्रेक इवन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज अ कॉन्सेप्ट. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है? दैट इज प्राइस पर यूनिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट. प्राइस से मुराद है सेलिंग प्राइस जो एक प्रोडक्ट की चार्ज की जाती है, और वेरिएबल कॉस्ट जो उस पर हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर किया, जैसा कि रॉ मटेरियल, लेबर, पैकेजिंग वगैरह. ओके. कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि रेवेन्यू क्या होता है, उस पर बात कर लेते हैं. हम ये टर्म बार बार यूज कर रहे हैं. रेवेन्यू इज द इनकम अर्न्ड बाय बिजनेस फ्रॉम सेल्स. और ये जो रेवेन्यू है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? रेवेन्यू इज कैलकुलेटेड बाय द यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय देयर प्राइस. And when we define contribution, we say contribution to the fixed cost. When the revenue from the selling of a product is enough, when the revenue from the selling of a product is enough to pay the variable cost of production, so we say contribution is positive. इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूशन कहते हैं. हमने भी सीखा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे कैलकुलेट की जाती है. अगर टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करनी हो तो उसका क्या फार्मूला है? टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस total variable cost. Yeah, we can also calculate it contribution per unit multiplied by units sold. So these are different concepts that are used in this break-even concept. Okay, we need to learn how break-even chart is drawn. For this, we need to learn about few lines. This is a graph. On the y-axis of this graph, costs are drawn. On the x-axis of this graph, the units or the output is drawn. A line that is straight is called fixed cost. The cost that does not change with the units of production. Units are 100, 200, 300. The line that is fixed horizontally, same line drawn, is called fixed cost, जो कभी भी change नहीं होगी, हमेशा same रहेगी. The line that starts from the
fixed cost is called total cost, because total cost is the sum of fixed cost plus variable cost. And the line that starts from 0 and crosses the total cost is called total revenue line. The blue line I have drawn in front of you. The two lines cross each other jahan pe, that is called break even point. This is the break even क्योंकि यहाँ पे total cost is equal to total revenue. इस point से पहले जो situation है वहाँ पे total cost is greater than the total revenue, इसलिए हमें loss हो रहा है. और after this line, when total revenue becomes greater than the total cost, तो हमें यहाँ पे क्या हो रहा है? Profit हो रहा है. This is the way break-even chart is drawn. Another concept that is attached with the break-even is called margin of safety. MOS is sometimes it's written like this. Margin of safety is the difference between actual or forecasted output and the break-even output. And break-even output. This margin of safety is calculated by the formula that I've written in definition 2. Margin of safety will be equal to actual output minus break-even output. For example, in the above graph, if we see that the break-even output level is 200, but the business is actually producing 300 units, the difference between both will be called margin of safety. It means 300 is the actual output minus 200 is the break-even output, so 100 is the margin of safety. This is how we calculate margin of safety in the break-even chart.